वाई एक्सिस पे हार्ट रेट प्लॉटेड है और एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन है। एक्स एक्सिस पे देखिए जो वन बिग स्क्वायर है इट इज़ इक्वल टू 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 1 सेंटीमीटर पर मिनट इज द रेट ऑफ द CTG मशीन फिल्म। नाउ ये जो फीटल कार्डियक ट्रेसिंग है ये मैक्सिमम जो ट्रेसिंग जिस लेवल पे है, जैसे यहाँ पे ये 120 पे है तो वो उसकी बेसल हार्ट रेट होती है, तो यहाँ बेसल हार्ट रेट जो है वो 120 है। फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस का ट्रेस देखिए, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्लॉटेड होता है। So number of uterine contractions in 10 minutes are noted and recorded and the intensity is also assessed. And now the variability. तो ये baseline से जितना भी shift होता है either in the upward direction or in the downward, जितना shift होता है वो variability कहलाती है। तो the normal variability is 5 to 25 beats per minute and variability can be either reassuring, non-reassuring or abnormal. If the variability is less than 5, it is reduced variability. Fetal sleep is the main cause. It can last up to as long as 50 minutes and it can also be due to reduced sympathetic and parasympathetic activity and CNS hypoxia due to acidosis. Increase in the fetal heart rate by 15 beats per minute lasting for at least 15 seconds is acceleration, and accelerations should be present in a healthy fetus, though absence of accelerations without any other risk factors is nothing significant. अर्ली डिसेलरेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन के शुरू होने पर डिसेलरेशन मतलब कि फॉल इन द हार्ट रेट होता है और फिर वो उसी के साथ नॉर्मल पर आ जाता है, तो ये अर्ली डिसेलरेशंस होते हैं एंड ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, मोस्टली इनसिग्निफिकेंट होते हैं, रीअश्योरिंग कैटेगरी में आते हैं। वेरिएबल डिसेलरेशन का कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोई पर्टिकुलर रिलेशन नहीं होता है, कभी भी होते हैं। वेरिएबल डिसेलरेशन भी अगर 90 मिनट से कम लास्ट कर रहे हैं और अगर उनमें कोई हाई रिस्क साइन नहीं है तो फिर वो रीअश्योरिंग कंसिडर किए जाते हैं। डिसेलरेशंस विच स्टार्ट आफ्टर at the end of the uterine contractions, can you see here, those are late decelerations, these are the most dangerous. इनकी प्रेजेंस ही ऑमिनस होती है और एबनॉर्मल की कैटेगरी में आपका CTG इंटरप्रिटेशन आ जाता है। ये यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से होते हैं, ये शैलो होते हैं और ग्रेजुअली रिटर्न करते हैं बेसलाइन तक। अनदर पैटर्न ऑन कार्डियक ट्रेस इज साइनोसॉइडल वेव पैटर्न। This is a regular sine wave like regular smooth sinusoidal pattern in the cardiac trace with an amplitude of 5 to 15 beats and 3 to 5 cycles की frequency रहती है और ये severe fetal anemia, sudden fall in maternal blood pressure उसकी वजह से होता है, abnormal pattern that falls into abnormal category. So now I will discuss about how to make a report on CTG findings and film. So first point is you have to define the risk. If the patient is hypertensive, diabetic, asthmatic or any other obstetric complications, then she is high risk. Otherwise, you can keep her in low risk category. Secondly, look for contractions for 10 minutes and also look for duration and intensity which is to be felt through palpation. So number of contractions in 10 minutes you have to report. Then the basal heart rate, so 110 to 160 is reassuring, okay, and less than that 110 to 100 is non-reassuring, 160 to 180 non-reassuring, and more than 180 less than 100 that is abnormal. Now about the variability, so there should be variability, it should be present for CNS integrity. So if it is between 5 and 25 it is reassuring. If it is less than 5 lasting for
up to 90 minutes and more than 25 lasting for up to 25 minutes, it is non-reassuring. If it is beyond those ranges with maternal and fetal risk factors, it is abnormal. Maternal risk factors are membranes are ruptured, there is rapid cervical descent of the presenting part, there is sudden hypotension, there is cord prolapse, passage of meconium. All these are risk factors. And now the next comment will be on the presence of accelerations, if they're present or not, and they should be present in a healthy fetus. And even if they're absent without any other risk factors, it is insignificant. Then comment on the presence or absence of decelerations. So decelerations should not be there in reassuring. If early decelerations are there or typical variable are there, then it is non-reassuring. If atypical variable are there or late decelerations or single prolonged deceleration. Now when the heart rate falls below 80 and it sustains for 3 minutes or so, then it is single prolonged deceleration. So it has to be taken care. So dear students, the last point to comment remains overall impression. So overall impression is normal if all the categories are reassuring. If one category is non-reassuring, it is suspicious. If more than one non-reassuring or one abnormal, it becomes pathological. So this is how we report a CTG.